My dear brothers and sisters, welcome to Sur Sangam Reflections from Jaipur. Come, let us now enter into a topic which is very familiar to you and me, namely love. You ask anyone, anywhere in the world, love is the one which that person wants. Whether it is an old person, young person, or even a little child. That's the way it is. Love is like the oxygen that we need to live physical life. Love we need for our living a spiritual life. Love can be very attractive. When I look at a beautiful girl, or when a girl looks at a beautiful man, there is a great attraction. And I call it, I love her or I love him. And we all love people who also love. In return, we want to give love. And we all realize God is love. Because all that we have is because of God. We possess nothing. When we enter into the world, we get our parents, our brothers and sisters, our neighbors, and many, many others. They all love us. And that is all a gift of God. The Jewish community had many commandments. You should do this, do that, etc. And some were considered great commandments, and some were considered little less commandments. One of the greatest commandments was exactly what our Muslim brothers call Allahu Akbar. Whatever happens, they say Allahu Akbar. Or even our Hindu brethren say Jai Shri Ram. Or in the preamble of American Constitution, it is written, in God we trust. In other words, God is everywhere. And Jesus repeats the same thing. The greatest commandment is to love your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. But then he makes a difference, a distinction. He takes out another little commandment which was there. Love yourself, love your neighbor as you love yourself. Now this he joins together. In other words, he wants to say, one does not exist without the other. St. John tells us elsewhere in a letter that if you cannot love your brother whom you see or your neighbor whom you see, then if you are telling that I love God, you are telling a lie. Because God you don't see with your naked eye. But your brother you see, you have to live with him, or your neighbor, you have to live with him. That is the test of your love for God. And therefore, if I am saying Allahu Akbar, I say in God I trust. Well, but that means it should be shown in the way you live. It is like a cross, a horizontal cross and a vertical. Vertical from the top to the other side, the horizontal. Both together, that makes a beautiful cross. That is really what life is. My dear friends, these rules or commandments, they are not simply a theoretical idea. If it remains only there, it's no use. And very often it can be. Like the politicians who go and shout, well, हम सबसे प्यार करते हैं. ये सब वो बातें कि हम सबके साथ हम चलते हैं. लेकिन even a priest may be preaching big things, but he or she is not able to live accordingly, then there is no love at all. It is simply what St. Paul calls like the banging sounds which mean nothing, a pataka, nothing more than that. My dear friends, today we need to ask ourselves what really is love. When I say my brother, usually these people, the Jewish people said something about a next Jew. They were very much concerned about their own community. And the same thing can happen to us. If I am a Hindu, I would love to love only a Hindu. If I am a Christian, I love to love only those who are Christians. Same thing with other religions too. That is the first way we live. Our religion, our people, our family, our biradari, etc. लेकिन बात ऐसी है कि आखिर प्यार का मतलब क्या है? प्यार का असली मतलब इससे भी बढ़कर है. And that is the practical way with which we live. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम उनसे भी प्यार करें जो हमसे प्यार नहीं कर सकते या नहीं करते, या कभी कभी हमसे दुश्मनी करते हैं. अभी ये इसके लिए एक चुनौती है, एक चैलेंज है, और ये मुश्किल है. ये असली प्यार है, क्योंकि ईश्वर हम सबों का पिता है. मेरा ही नहीं,
आपका ही नहीं, हम सबों को पिता है। और एक ही फैमिली के होने के नाते, एक ही ईश्वर की बिरादरी के होने के नाते हमें प्यार सबसे करना है। और ये इतना आसान नहीं है, ये मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम जरूर कर सकते हैं और करना भी चाहिए। और ऐसा मौका हमें मिल जाता है। और कभी कभी हम किसी को क्षमा दे नहीं सकते, क्षमा भी एक प्यार है। और किसी के साथ चलना, किसी के घर जाना जो हमसे प्यार नहीं करते, ये भी एक प्यार है। हर प्रकार से ये प्यार जो है वो हमारी चुनौती देता है। जो खरा उतरता है वही सच्चा प्यारा है। और इसीलिए प्रभु जो है क्रूस पर यानी सूली पर चढ़े। इसलिए नहीं कि वो सूली पर चढ़ना चाहते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने लोगों से इतना प्यार किया, उन्होंने उनसे घृणा नहीं किया। इसलिए उन्होंने सूली पर भी कहा कि इन लोगों को क्षमा कीजिए, क्योंकि मुझे मार रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं इससे हमें कितनी जरूरत है। आज इस संसार में घृणा फैल रही है, हमारे समाज में घृणा फैल रही है। एक दूसरों को कत्ल किया जा रहा है, एक दूसरों के नफरत फैला जा रहा है। इसीलिए हमारे जिंदगी में प्यार का अभाव है। और जहां प्यार नहीं है वहां ईश्वर कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल गलत है, हम कह रहे हैं हम ईश्वर को मानते हैं। किसी भी तरह से हम ईश्वर को नहीं मान रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। अगर हम प्यार नहीं कर सकते या करते नहीं है, तो हमारे मन में, हमारे दिल में ईश्वर बिल्कुल नहीं है। नाम मात्र के लिए वहां पर एक स्लोगन लगाना, ये प्यार नहीं हो सकता। तो आज हम सभी इसके बारे में मनन चिंतन करें। यह बहुत ही आवश्यक है। आवश्यक इसीलिए, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें ना केवल ईश्वर से प्यार करना है, ईश्वर के लिए सबसे प्यार करना है। और यहां तक कि हमारे परिसर भी प्यार करना है, आने वाली पीढ़ियों से भी प्यार करना है। इस प्रकार एक नया जीवन, एक नया भारत हमें बनाना है जो प्यार से बना हो। यही हमें एक हमारी धरोहर है जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी है, इसे आगे बढ़ाना है। चाहिए हम करें या ना, ये हमारे ऊपर निर्भर है। यह चुनौती को हमें अपनाना है और हमारे दिल में ये ईश्वर का प्यार और मनुष्यों के एक दूसरों का प्यार हमारे मन में रखना है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।